So what really has led to this endless political back and forth over the Mahakumbh? Why has the opposition been up in arms over the Kumbh? From questioning the arrangements for the last many weeks for the people who've gathered at the Kumbh, to raising the two stampedes that broke out, which we'll talk about in just a bit, and then even questioning the claims of this being a once in 144 years Mahakumbh, the opposition has raised several issues with the Kumbh. Here's a recap of what the opposition said. মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है, उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। बजट में वो हुआ था, लेकिन इन्होंने प्रचार बहुत किया, बजट ज्यादा दिया, दोनों सरकारें लग गई, उसके बावजूद भी भगदड़ में लोग मर गए, सड़कें जाम रहीं, लोगों को रात दिन गुजारना पड़ा अपनी गाड़ियों में बैठ करके, सड़कें हर तरफ दूसरे स्टेट तक ब्लॉक रहीं, ट्रेनों का जो इंतजाम करना था ट्रेन नहीं पहुंच पाई, पूरी ट्रेन नहीं चलाई, संख्या नहीं चलाई उतनी, भगदड़ मच गई, उसमें भी लोगों की जान चली गई। इस सरकार ने कुंभ के बहाने न जाने कितनों की जान ले ली है। क्या 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 मांग करेंगे कुंभ में सर? जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। So we've given you essentially just a glimpse into the kind of controversial comments that were made about Kumbh. Now, many of these leaders themselves took a dip into the Mahakumbh, like Akhilesh Yadav, who visited the Mahakumbh and took a holy dip. Then there was D.K. Shivkumar, who not only took a holy dip, but also praised the Kumbh arrangements. And you also heard from several of these leaders when they went ahead and praised the Mahakumbh as well. Let's talk also about the controversy about Kumbh and the large influx of devotees. It was on Mauni Amavasya, the most auspicious day of Mahakumbh, that crores of devotees suddenly gathered at the Triveni Sangam to take a holy dip. This led to a deadly stampede. 30 devotees lost their lives. 60 people were left injured. Now, according to officials, several devotees gathered near the Sangam nose, and around 1 a.m. they tried to jump barricades, which were put up to manage these crowds. The government faced massive flack for the incident, particularly because for hours there was no update on the death toll. Only post 6 p.m., a whole 15 hours later, did we get an update. And that is why the opposition says there was an attempt to cover up the incident. And then 2 weeks later, another stampede, this time at the New Delhi railway station. A sea of devotees waiting to board a special train to Prayagraj moved from one platform to another, leading to chaos and 18 people dying. And these incidents raised questions about the management of Kumbh, about whether these stampedes could have been avoided with better management of the crowd. Did the administration also try to cover up the stampedes by not giving out official figures until much later? Was there an attempt, therefore, to hide the casualty count? It's these questions that the opposition has been constantly asking, raising with, in fact, the government to say the Mahakumbh was not
a success.